Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Gopi Janavallabha Girivaradhari. Jai Gopi Janavallabha Girivaradhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Jamuna Thira Vanachari. Jamuna Thira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Srila Prabhupada ki Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai Gau Premanandi Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading Srimad Bhagavatam. Someone who's translating? This is text 5, 6, and 7. Chapter 5. 10, 5. So reading Srimad Bhagavatam, chapter 5. The meeting of Nanda Maharaja and Vasudeva. Beginning with text 5. तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 5वें अध्याय नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट नामक श्लोक से पाठ करेंगे। ये 5वां श्लोक है। So I'll read the translation and then you read it in Hindi, okay? Okay. We're going to do which shlok is on the board? 5? 5th. Somangalya Giro Vipra. Somangalya Giro Vipraha. Sutta Magada Vandinaha. Sutta Magada Vandinaha. Gayakascha Jagurnedur. Gayakascha Jagurnedur. Beryo Dundu Bayo Muhu. Bheryo Dundu Bhyor Muhu. Somangalya Giro Vipra. Sutta Magada Vandinaha. Sutta Magada Vanditaha. Gayakascha Jagurnedur. Gayakascha Jagurnedur. Beryo Dundu Bayo Muhu. Beryo Dundu Bayo Muhu. Samangalya Giro Vipraha.
Sutamagata Suta Mangata Vandita Gayakascha Jagurnedur Paschaja Gurnetu Eryodundu Bayomuhu Tundu Ayomu Vipraha Somangaya Kiro Vipra Sutamagata Vandinaha Dita Gayakascha Jagurnedur Ayakaschaja Gurnetur Eryodundu Bayomuhu Yeryo Dundu Bayomudu Mangala Gira Vipya Vipra Magada Vandina Gayakascha Jagurnedur Eryodundu Bayomuhu Somangaya Gira, whose chanting of mantras and hymns purified the environment by their vibration. जिनकी वाणी से निकले मंत्र तथा स्तोत्र वातावरण को शुद्ध करते थे। Vipra, the Brahmanas. ब्राह्मण गण, Suta, सूत experts in reciting all the histories. इतिहास गाने में पटु लोग, Magadha, मागध experts in reciting the histories of special royal families. राज परिवारों के इतिहास गाने में पटु लोग, Vandana, वंदिना general professional reciters. सामान्य वाचक, Gayaka, गायका singers. गवैये, Cha, च as well as. भी, Jaghu, जगुहु chanted. उच्चारण किया, Neduhu, नेदुहु vibrated. बजाया, Virya, भेर्यः a kind of musical instrument. एक प्रकार का वाद्य यंत्र, Dundubaya, दुंदुभयः a kind of musical instrument. एक प्रकार का बाजा, Muhu, मुहुः constantly. निरंतर। Translation by His Divine Grace A.C., the followers of His Divine Grace A.C., Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And this is by Bhaktivedanta Swami Prabhupada till chapter 13. Yeah. The Brahmanas recited auspicious Vedic hymns which purified the environment by their vibration. The experts in reciting old histories like the Puranas, the experts in reciting the histories of royal families, and general reciters all chanted while singers sang, and many kinds of musical instruments like berries and dundubis played in accompaniment. ब्राह्मणों ने मंगलकारी वैदिक स्तोत्र सुनाए जिनकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो गया। प्राचीन इतिहासों या पुराणों को सुनाने वाले, राज परिवारों के इतिहास सुनाने वाले तथा सामान्य वाचकों ने गायन किया, जबकि गवैयों ने भेरी, दुंदुभी आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की संगत में गाया। I'll just chant the shlokas here. Braja samrishta sangshikta dva rajira grihantaraha chitra dhvaja pataka srak chalya palvala toranai. Brajapur, the residence of Nanda Maharaj, was fully decorated with varieties of festoons and flags, and in different places, gates were made with varieties of flower garlands, pieces of cloth, and mango leaves. The courtyards, the gates near the roads, and everything within the rooms of the houses were perfectly swept and washed with water. नंद महाराज का निवास व्रजपुर रंग बिरंगी झंडियों तथा झंडों से पूरी तरह सजाया गया था और विभिन्न स्थानों पर नाना प्रकार के फूलों की मालाओं, वस्त्रों तथा आम की पत्तियों से तोरण बनाए गए थे। आंगन,
सड़कों के पास के दरवाजे तथा घरों के कमरों के भीतर की सारी वस्तुएं अच्छी तरह से झाड़ बुहार का पानी से धोई गई थी। Text 7. Gavo Vrisha Vatsatara Haridra Taila Rushita Vichitra Dhatu Barahasrang Vastra Kanchana Malinaham. The cows, the bulls, and the calves were thoroughly smeared with a mixture of Supreme Personality of Godhead has instructed in Bhagavad Gita 1844, Krishigo Raksha Vajinang Vaishya Karma Swabhavajam. भगवान के भगवत गीता 1844 में आदेश दिया है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के गुण हैं। Farming, cow protection, and trade are the qualities of work for the Vaishyas. खेती करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के गुण हैं। Nanda Maharaj belonged to the Vaishya community. हाँ, तुम बहुत अच्छे से ग्रंथ वितरण कर सकते हो, और मैं विचार कर रहा था ये ग्रंथ वितरण संकीर्तन क्या वस्तु। So by Prabhupada's mercy, we were living in a little paradise, very beautiful, with the cows and natural greenery. So it's very nourishing, very spiritually nourishing. तो श्रील प्रभुपाद Prabhupada giving us Vrindavan in all our temples. श्रील प्रभुपाद ने हमारे सभी मंदिरों में हमें वृंदावन प्रदान किया है, Because in Vrindavan, they rise early and they're singing the glories of Krishna. क्योंकि वृंदावन में वे सवेरे जल्दी उठते हैं और भगवान कृष्ण की महिमा। One interesting story, my friend Radhalingan Prabhu, we were distributing books in West Palm Beach Airport. यद्यपि वासुदेव कृष्ण को लेकर नंद महाराज के पास देकर आए थे, किंतु नंद जन्माष्टमी का पालन किया। Just like we had Balaram's appearance day and then Janmatli, taking care of cows and bulls and milk and yogurt and various products. They were very, very wealthy. तो ये बड़ी रोचक घटना है कि कैसे ये बड़े ही सीधे साधे खेतीहर किसान, इनके पास इतने सारे दूध के पदार्थ मौजूद थे। In this Kali Yuga, technology, industrialization, they're thinking in this way. के माध्यम से हम सभी संतुष्ट हो जाएंगे, But with technology and industrialization, you cannot. किंतु प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण की सहायता से हम 200,000 cows with nicely decorated with jewels. किंतु इनके पास इतनी संपदा थी कि ये गायों को भी जेवरात पहनाया करते थे। नंद महाराज ने 2 लाख गायों को जेवरात पहनाए थे, आभूषण पहनाए थे। So Prabhupada was making a mention specifically at the end of the purport. He said how this is Indian civilization. प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में लिखते हैं कैसे ये वास्तविक वैदिक जीवन शैली है। This is Bharat Bhumi te hoila manusya janma jar janma sarataka kori khara parupaka. Very, very pious birth. ये है भारत भूमि, ये है भारतवर्ष, भारतीय सभ्यता। They said people are suffering because of giving up the Vedic way of life and not understanding the teachings of Bhagavad Gita. प्रभुपाद लिखते हैं कि लोग वैदिक जीवन शैली को छोड़ने के तथा भगवत गीता की शिक्षाएं न समझने के कारण कष्ट भोग रहे हैं। And people asked Prabhupada, why you have come here? He said, to remind you what you have forgotten, that the Jivera Swarupoy Krishna and Nityadas were all servants of Krishna, and Krishna is the supreme Lord of everyone. प्रभुपाद से पूछा गया आप यहाँ क्यों आए हैं, तो प्रभुपाद ने बताया मैं आप सभी को ये स्मरण कराने आया हूँ कि भगवान कृष्ण परमेश्वर भगवान है और हम सभी उनके नित्य सेवक। All the great acharyas, all the scriptures, Puranas, Itihasas, they all declare Krishna as a supreme Lord. सभी इतिहास, पुराण, सभी महान ग्रंथ ये भगवान कृष्ण को परमेश्वर के रूप में घोषित करते हैं। And Dharma, religion comes from God, from Krishna. और धर्म भगवान कृष्ण से ही आता है।
as Vyasadeva, he compiled the Vedic literatures for our benefit so we can understand how to properly behave, so we can awaken our love for God. और वेद व्यासों का संकलन करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि भगवान का परिचय क्या है और हम भगवत प्रेम को फिर से जागृत कर सकें. And Krishna personally appeared, Paritranaya sadhunang vinashaya cha dushkritam, dharma samstarpanartaya sambhavami yuge yuge. In order to reestablish religious principles, he personally comes. धर्म के सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं. But atheistic, non-believers, they'll think, oh, how God can come. He did not come. This is just their illusion and their being the lowest of mankind. किंतु पाखंडी नास्तिक कहते हैं कि भगवान कैसे आ सकते हैं. Namang dushkritino mudha prapajate naradama. That those who are atheistic and foolish, they never accept the authority of the Supreme Lord. जो नास्तिक हैं, मूर्ख हैं, ये परमेश्वर भगवान की सत्ता को कभी भी स्वीकार नहीं करते. And especially in Kali Yuga, some of us may not have been that religious, but still we were attracted by the way Srila Prabhupada presented Krishna and the Vedic teachings. हो सकता है कलयुग में हम इतने धार्मिक न भी हों, किंतु हम श्रील प्रभुपाद के प्रस्तुतिकरण से कैसे उन्होंने वैदिक साहित्य के माध्यम से कृष्ण को प्रस्तुत किया, इससे आकृष्ट हो गए. This International Society for Krishna Consciousness is not based on sentimentalism and fanaticism. ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ पागलपन और सनकीपन पर आधारित नहीं है. It's based on logic, reason, and authority. ये तर्क और सत्य पर आधारित है. Because if one with an open mind, open heart, in the association of devotees hears Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, hearing Krishna Katha, naturally it cleans the heart. यदि कोई खुले मस्तिष्क से, खुले हृदय से कृष्ण कथा को सुनेगा तो उसका हृदय स्वच्छ हो जाएगा. And how do we know that the heart is becoming cleansed? Is that we become attracted to hearing more Krishna Katha. और कैसे समझे कि हमारा हृदय पवित्र हो रहा है? ऐसे समझें जब हम कृष्ण कथा को अधिक से अधिक सुनने के लिए आकर्षित हों. Satang prasangam mama virya sangvidho. In the assembly of devotees, that faith increases and the potency of the katha becomes more powerful. सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो. भक्तों की संगति में इस कथा की शक्ति बढ़ जाती है और हम इसको सुनने के लिए आकर्षित होते हैं. Sometimes people want to live alone in the sacred place and just chant and not be bothered by so many others. But Bhakti Siddhanta Saraswati said, no, what kind of cheater are you? Because your mind will only think of money and women. कभी कभी कुछ लोग निर्जन स्थान पर भजन करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यदि आप एकांत में जप करेंगे तो आपका मन केवल धन और परस्त्री के बारे में विचार करेगा. If you have a little stick, you can easily break it. यदि एक छोटी सी डंडी हो तो आप सहजता से उसे तोड़ सकते हैं. But if you group many sticks together, you cannot break them. किंतु आप कई छड़ों को, डंडियों को एक साथ लें तो उसको तोड़ना संभव नहीं है. So these temples and and Prabhupada's books and teachings are our support system. तो ये मंदिर और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं वास्तव में यही हमारी आधारभूत हैं. We should not think that, oh, I've already been doing this for 30, 40, 50 years. I can skip Mongol Aarti, I can skip Tulsi Puja, I can skip Guru Puja, and once in a while I'll give a class, but I won't go to class. We should follow Prabhupada's instructions. He was always asking, where is so-and-so? Where is so-and-so? No other business than being here in Bhagavatam. कभी कभी हम विचार कर सकते हैं, ओ मुझे 30, 40, 50 वर्ष हो गए, अब मुझे मंगल आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा इत्यादि करने की क्या जरूरत है? मैं कभी कभी कक्षा दूंगा लेकिन कक्षा में भाग नहीं लूंगा. नहीं, श्रील प्रभुपाद हमेशा प्रश्न किया करते थे
अमुक व्यक्ति कहाँ है, अमुक व्यक्ति कहाँ है, तो इस समय हमारे पास मंदिर में रहना छोड़कर और कोई कार्य नहीं होना चाहिए। Later in the 10th canto, Krishna sends Uddhava to Vrindavan to see how intense is the love of Nanda, Yashoda, and the gopis and gopas for Krishna. श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में हम बाहर देखते हैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण उद्धव को वृंदावन भेजते हैं, ये दिखाने के लिए कि गोपियों का, नंद महाराज का, यशोदा माँ का उनके प्रति प्रेम कितना प्रगाढ़ है। So when Uddhava arrived, was greeted very nicely by Nanda and Yashoda, and Nanda Maharaj and Mother Yashoda were just out of love and affection expressing their extreme love for Krishna. तो जब उद्धव वृंदावन पहुंचे तो उस समय नंद महाराज और यशोदा माँ कृष्ण के प्रति अपने प्रगाढ़ प्रेम को व्यक्त कर रहे थे। And what are the activities of the gopis and gopas? They're churning butter, they're taking care of the cows, and they're singing all day Krishna, Yashomati Nandana Braja Varanagara. तो सभी गोप गोपियां वहां पर अपने गायों को दूह रहे थे, मक्खन बना रहे थे और सारा दिन कृष्ण कथा कर रहे थे, और इस प्रकार से यशोमती नंदन ब्रजवर नागर। So even though we're in the blind Kali Yuga full of darkness, Srila Prabhupada is introducing Bhagavat Dharma and also Varnashram Dharma. यद्यपि हम इस अंध कलयुग में रहते हैं, किंतु श्रील प्रभुपाद ने हमें भागवत धर्म और वर्णाश्रम धर्म से परिचय कराया है। First of all, we're cultivating an understanding of how one should behave. There are many ceremonies for before birth, after birth. There are many, many ceremonies involved in Vedic culture, and they're all meant to enhance our understanding of life. वैदिक सभ्यता में कई प्रकार के संस्कारों की संस्तुति की गई है और इसकी सहायता से हम जीवन के मर्म को समझ सकते हैं। We see the trouble in the world. People are fighting, they're frustrated, they're unhappy. हम इस जगत में सभी कष्टों को देख सकते हैं। लोग खुश नहीं हैं, सुखी नहीं हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। Adhyatmika, Adhidaivika, Adhibodhika, the demigods, Mother Nature's chastising so many earthquakes and so many floods and disasters are there in the world. आध्यात्मिक, आदि भौतिक एवं आदि दैविक क्लेश, प्रकृति माँ हमसे प्रसन्न नहीं है, इतने प्रकार के भूकंप आ रहे हैं, इतने प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। We see it, if you see anything on the news, it's all bad. It's all very, very bad. Either pandemic, war, suffering, anxiety, frustration. यदि आप समाचार पत्र को देखें, खबरों को देखें, तो देखेंगे सब तरफ केवल नकारात्मक ही समाचार फैले हुए हैं। युद्ध हैं, भीषण विकंपाएं हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, केवल यही खबरें आती हैं। And that's not just now. That has since time in the material world, Dukkaliyam Shashvatam. It's a place of temporary place of misery. तो ये कोई नई बात नहीं है, ये भौतिक प्रकृति वास्तव में दुखों की अस्थायी जगह है। Brahma Bhuvanaloka Punaravartano Arjuna. From the highest planet, Brahmaloka, the heavenly planets where life is so long, so many enjoyments are available. Still, birth, death, old age, and disease are there. ब्रह्म भुवनान लोकाना पुनरावर्तन अर्जुना। भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक से लेकर सबसे छोटे ग्रह तक जीवन मृत्यु का चक्र लगा रहता है। So Srila Prabhupada is giving us a special opportunity, giving us a window of the spiritual world so that we can see what is going on in eternal life. श्री प्रभुपाद हमें एक विशेष सुअवसर प्रदान करते हैं कि आध्यात्मिक जगत में क्या चल रहा है, वे इसके बारे में हमें बताते हैं। And throughout the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, the description of the Brahminical godly qualities are there. और पूरे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में ब्राह्मण गुणों के बारे में बहुत विशद वर्णन किया गया है। And it's not that we can artificially try to, how do I develop tolerance, mercy, cleanliness, truthfulness, austerity, and so many rules and regulations. How do we accomplish
such a huge task. तो ऐसा नहीं है कि कृत्रिम रूप से हम इन गुणों को विकसित करें, जिसमें शौच हो, तपस्या हो, सरलता हो, क्षमाशीलता हो, इन सबको हम कृत्रिम रूप से विकसित नहीं कर सकते। Yasyasti bhaktir bhagavati kinchana savargunais tatra samasate sura. That one who's devotedly performing his devotional service, all the good qualities of the demigods become manifest, awakened within your very being. यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणैः तत्र समासते सुरा। जो भी अकिंचन निष्किंचन भाव से भगवत भक्ति का अनुशीलन करता है, उसमें देवताओं के समस्त गुण दृष्टिगोचर होते हैं। So Srila Prabhupada, although Kalau Sudra Sambhava, everyone is born low class in this age of Kali Yuga. कलौ शूद्र संभव, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कलयुग में हर कोई नीच जन्म से ग्रसित है। But they're making brahmanas by initiation, but not only that one should be qualified. Prabhupada is not doing something cheap like selling some mantra for some money and having cheap followers. He wants that people who are following are actually qualified to receive their initiation. श्रील प्रभुपाद दीक्षा के माध्यम से मंत्र प्रदान करते हैं, किंतु ये ऐसा नहीं है कि हम पैसे देकर मंत्र प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि हम गंभीरता से इस प्रक्रिया का अनुशीलन करें। So anyone who wants to accomplish anything in life, they have to be full of enthusiasm, determination, and patience. They need to actually be excited to perform that activity to become qualified in that field. यदि हम जीवन में किसी उच्च स्थान पर पहुंचना चाहते हैं तो हमारे पास उत्साह, निश्चय और धैर्य होना चाहिए, और सिर्फ ये होने से ही काफी नहीं है, हमें इसका अभ्यास भी करना होता है। And many times Prabhupada say this is simply entertainment, simply enjoyment, chanting, dancing, feasting, festivals. I mean, we have a party every other day practically, isn't it? So many festivals. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में ये प्रक्रिया कितनी मनोरंजक है। केवल जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, नाचिए, खाइए, हर रोज हम लोग त्योहार मनाते हैं। Krishna is in everyone's heart. Sarvasya chahang hridi sanavishto matat smriti jnanam apohanam cha. He's giving everyone knowledge, remembrance, and forgetfulness. सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान कृष्ण सभी के हृदय में अवस्थित हैं और सभी को स्मृति, विस्मृति और ज्ञान प्रदान करते हैं। And because he's sitting in our heart next to the Paramatma, next to the Jivatma, yeyatamang prapajate tangstatavajamyaham. Krishna knows how that if we want to surrender, he'll give us intelligence how to go further in Krishna consciousness. क्योंकि भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में जीवात्मा के साथ में अवस्थित हैं, इसलिए वे हमें ये ज्ञान प्रदान करते हैं कि कैसे हम कृष्ण भक्ति में अग्रसर हों। Not that you're going to lock yourself in a room and read the whole Bhagavad Gita and study and all the shlokas and the Bhagavatam, and simply by your own endeavor, you're going to awaken your love for God. ऐसा नहीं हो कि एक बंद कमरे में हम भगवत गीता या भागवतम का अध्ययन करें और इस प्रकार से बंद कमरे में ही हम भगवत प्रेम का विकास कर लें, ये संभव नहीं है। Because I've been doing this almost 50 years, but every time I read, it's a newer and fresher understanding. So by doing devotional service, Krishna is giving you more and more realizations as you want them. मैं पिछले 50 वर्षों से ऐसा कर रहा हूं, किंतु जब भी मैं भागवतम को पढ़ता हूं तो मुझे एक नई अनुभूति का अनुभव होता है, क्योंकि कृष्ण भगवान हमारे हृदय में स्थित हैं और हमें हृदय से नई नई अनुभूतियां प्रदान करते हैं। Everyone may say, "Oh, I want Krishna. I want spiritual life." They may say like that. हर कोई कह सकता है, ओ मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे आध्यात्मिक जीवन चाहिए। But we have to control the mind. That means, what's the first thing? Got to take rest early on time. किंतु हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको रात को जल्दी सोना होगा। Because when that early morning comes, time for you want to be enthusiastic that yes, I will go greet the Lord and sing and dance with the devotees, not feeling, oh, why so much trouble? I'd rather sleep in. ताकि भोर में हम जल्दी उठ सकें और जाके भक्तों के साथ नाचे गाएं,
ऐसा नहीं कि वो इतना आलस के कारण मैं उठ नहीं सकता, बड़ी तकलीफ हो रही है। And also steady reading. We have to read just by hearing this katha, not just in a casual way, but really with heart and really wanting to be part of what's being conveyed in the message. और हमें नियमित रूप से ग्रंथों का भी पाठ करना है। कृष्ण कथा, इसका श्रवण करने से, इसको पढ़ने से श्रील प्रभुपाद हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ये हमें प्रकट होता है। So it says that we should follow or serve a resident of Vrindavan, and that's Srila Prabhupada. He's our resident in Vrindavan that we're following. ऐसा कहा जाता है कि हमें वृंदावन वासी का अनुसरण करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और ऐसे वृंदावन वासी जिनका अनुसरण हम करते हैं, ये हैं श्रील प्रभुपाद। In Krishna's most compassionate mode, he appeared as Chaitanya Mahaprabhu. और अपने सबसे परम कृपालु अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। Krishna Varnam Tisha Krishnam Sangopam Gastra Parshidam Jagnai Sankirtan Praya Yajantihi Sumedha Saha. One who's intelligent, he'll worship Chaitanya Mahaprabhu, who's here with all his associates. जो मेधावी है, जो बुद्धिमान है, वो चैतन्य महाप्रभु को उनके सभी अनुचरों के साथ उनकी सेवा करेगा। And when the Lord comes, he comes with all his associates. जब भगवान आते हैं, वे अपने सभी पार्षदों के साथ आते हैं। So we have the Goswamis who are personally instructed by Chaitanya Mahaprabhu. तो हम गोस्वामियों से परिचित हैं, जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं शिक्षित किया था। Even though Goswamis were born in a high Brahmin family, they were serving Nawab Hussain Shah, the Muslim government, so they were ostracized or even considered like Shudras. यद्यपि गोस्वामियों का जन्म उच्च ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तथापि चूंकि वे नवाब हुसैन शाह की मुसलमान सरकार में सेवा करते थे, इसलिए ब्राह्मण समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया था। Chaitanya Mahaprabhu wanted to hear from Ramananda Roy, who was born in Shudra and was a government governor. चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से श्रवण किया, जो कि शूद्र परिवार में जन्म लिए थे, किंतु ये बंगाल के गवर्नर थे। What's the verse? Kiba vipra kiba nashi shudra keni no ye Krishna tattva veta se guru hoy. So one who understands the science of Krishna, he's accepted as guru. किवा विप्र किवा शूद्र न्यासी के न जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। तो कोई किसी भी सामाजिक स्थिति में क्यों न हो, यदि वो कृष्ण को जानता हो, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। So Krishna is appearing again and again. So he just appeared as Chaitanya Mahaprabhu, and the Bhagavatam is also his incarnation. तो भगवान कृष्ण बार बार आते हैं। कुछ दिनों पहले ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए थे, और श्रीमद् भागवतम भी भगवान का ही अवतार है। So the Goswami scrutinizingly studied all the scriptures and put them